You are a proud content creator, your posts are going viral, your followers are increasing, and more brands want to collaborate with you. Congratulations, you are now an influencer. पर influencer का मतलब क्या होता है? ASCII defines an influencer as someone जिसके पास audience है और ऐसी पावर है जिससे वो अपनी ऑडियंस के परचेजिंग डिसीजंस या तो उनके ओपिनियंस अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस को इन्फ्लुएंस कर सके। ये जॉब प्रोफाइल हमें कभी स्कूल या कॉलेज में तो सीखने नहीं मिली, बट टुडे इंडिया बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिएटर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ये बिजनेस इज वर्थ easily more than 1200 or 1300 crores. So naturally, with a sector so big and so important, there will be some amount of responsibility on influencers. Legally बताऊं तो here are some tips that every influencer will find handy. As an influencer, कई बारी आपने शायद ये नोटिस किया होगा या महसूस किया होगा कि आपकी बनाई हुई रील्स या पोस्ट अभी कोई और सोशल मीडिया पर इमिटेट कर रहा है. Can you do something in a situation where you feel that somebody else is copying a theme, a concept, an idea that you probably started or did prior to them? Well, legally बताऊं तो there is really no copyright in general ideas, concepts, themes, even a historical fact. So for example, अगर आपने किसी general theme पे कोई रील बनाई है या static post बनाया हो and several other influencers are doing something similar based on that same theme or topic, there is unfortunately nothing you can do in terms of infringement. However, on the other hand, if as an influencer, you have certain catchphrases जो सिर्फ आप यूज़ करते हैं, for example, RJ Malishka and Mumbai Ki Rani, or Malika Dua and her catchphrases, Kyots, Cures Me, these are all trademark protected. Similarly, अगर आपकी ऐसी कोई catchphrases है जो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है या फिर जिससे आपके फॉलोअर्स और आपकी ऑडियंस उनसे रिलेट करने लगी है, then you must consider getting a trademark registration for such catchphrases. Next up, let's talk about due diligence. Now, under the ASCI guidelines as well as under the Consumer Protection Act, an influencer is required to exercise due diligence. पर due diligence का मतलब क्या हुआ? Due diligence means किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे बात करने से पहले आप उसके बारे में पूरी चीज़ें समझ ले, जान ले. अगर आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हो, if you're making any claims about how fantastic or superb a product is, about its performance, then you need to know for yourself that all those claims are actually true. So make sure that factually आपने ये सारी चीज़ों को actually खुद चेक किया हुआ है. In fact, under the Consumer Protection Act in India, failure to do so is also a punishable offense. Next up, let's talk about disclosures. As an influencer, अगर आप कोई भी product या service अपने social media handles पे promote कर रहे हैं, then it is now also important for you to make a disclosure. Disclosure का ये मतलब हुआ कि आपको उस post पे relevant tags use करने compulsory है. For example, is it a sponsored ad? Is it a paid partnership? Is it a collaboration between you and someone else? अगर आपको किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए कोई कंसिडरेशन दिया गया हो, कोई बार्टर हो, एज एन इन्फ्लुएंसर यू हैव टू मेक श्योर दैट अ डिस्क्लोजर इज नॉट मिस्ड बाय योर व्यूअर्स. ऐसा ना हो कि आपने अपने डिस्क्लोजर को बहुत सारे हैशटैग्स में बरी कर दिया हो. सो व्हेन इज अ डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड? जब आप कोई भी प्रोडक्ट को अपने आप परचेज करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं या अपने पेज पे उसके बारे में कुछ भी शेयर करते हैं ऑन योर ओन, then that does not require any disclosure. Similarly, when there is any discussion, review, or an endorsement of a product online on your own, even that does not warrant a disclosure if it's not something that has been initiated by a brand. As an influencer, आपको ensure करना है that your disclosure is not missed by the viewer. जब आप कोई फोटो या वीडियो पोस्ट करते हो, तब your disclosure label must be superimposed on such a post or a video. The duration of the disclosure is directly dependent on the length of your video. For example, for a video of anywhere up to 15 seconds, the label must stay for a minimum of 3 seconds. For videos between 15 seconds and up to 2 minutes, the disclosure label must stay up to 1/3 of the entire video. For videos more than 2 minutes, the disclosure label must stay for the entire portion where the brand is being mentioned or its products or features or services are being described. अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो आपको ये डिस्क्लोजर लाइव स्ट्रीम के बिगिनिंग और एंड में करनी पड़ेगी.
इसके साथ साथ if the live stream is posted on your feed, then the disclosure must also be included in your caption. The disclosure label can be in English or in the language as the advertisement itself. So just remember, gone are the days where you could be an influencer without any consequences. Because you have the public's attention, be sure to exercise your influence in a responsible manner.